ये Asus ZenFone मोबाइल है जिसमें 5G बाईपास करना है। तो इसके लिए हम जो है ऑलरेडी पहले से हमने कनेक्ट कर रखा है वाईफाई से। अब आगे देखते हैं क्या करना है। ऐड नेटवर्क, उसके बाद सेलेक्ट हुआ। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा टेक्नो कैटरिक का, जो कि हमने ऑलरेडी मेमोरी में डाल रखी है, इसलिए मेमोरी से इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद बैक चलते हैं और हमें सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे सेटिंग। सेटिंग में आने के बाद कुछ सेटिंग करते हैं ऐप से। सेटिंग के में आने के बाद जो है
सर्विस को डिसेबल कर लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी में डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन डीएक्टिवेट में करना क्या है, अकाउंट्स में अकाउंट में आने के बाद गूगल यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना। एग्री करने के बाद पुनः हमको डिसेबल ऐप को इनेबल कर लेना है। जाकर रीस्टार्ट कर देंगे। हमारा सेट रीस्टार्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एग्री करते हैं। इस तरह हमने Asus ZenFone का सक्सेसफुली आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको अपना रीसेट मार देंगे ताकि अपने ईमेल आईडी पासवर्ड समाप्त हो जाए। कम्प्लीटली FRP बाईपास हो चुका है Asus ZenFone का। और आप देख सकते हैं ठीक ठाक हो गया। तो इस तरह हमने देखा Asus ZenFone का किस तरह हमने टेक्नो के ट्रिक के हेल्प से FRP बाईपास किया। इसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो टेक्नो के ट्रिक डाउनलोड करने में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको भी हेल्प मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। और हाँ, क्विक शॉर्टकट मेकर और गूगल अकाउंट मैनेजर का इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि वो वर्क नहीं करता है। और मैंने कई बार किया लेकिन नहीं काम कर रहा था, तो ये टेक्नो के ट्रिक का इस्तेमाल किया। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, कोई ऐसे ही वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो।